The top court today, in what is being seen as a big victory for the Aam Party, went on to say that the aldermen do not have the right to vote, and the nominated members, nominated basically by the LG when it comes to the Municipal Corporation of Delhi, cannot vote even in the first MCD meet. And the first MCD meet should happen within 24 hours, Sunil. So a very strong and a very clear verdict from the Supreme Court, considering the elections for the MCD had actually happened around 2 months back in December 2022. That's right. In fact, the Supreme Court actually giving 24 hours notice to the Lieutenant Governor and the MCD to convene and, notify a meeting for the election of the mayor as well as deputy mayor. And then, of course, standing committee, and making it clear that the mayor will preside over the election for the deputy mayor and the standing committees, and nominated members or the aldermen will not have a right to vote. This is really a big relief, not only for the Aam Aadmi Party, but for the people of Delhi, because elections were held on the 4th of December for 250 councillors. They have been waiting to take their oath, to be able to, carry on with day-to-day business. India as well as New Delhi will be hosting the G20. There are many issues, from the desilting to cleanliness, to issuing of birth certificates and death certificates, to permits, to where elected representatives play a key role apart from various other issues of governance. And it's in that context that Delhi now will finally have a mayor, a deputy mayor, as well as a standing committee. Right. Thank you, Sunil Prabhu, for those details. And I'm being joined by panelists, Priyanka Kakkar, who's the Aam Aadmi Party spokesperson, as well as Mahesh Verma, who's the spokesperson for BJP. So coming to you first, Priyanka Kakkar, thank you for joining us. How do you see this a victory for the Aam Aadmi Party? Sneha, good evening to everyone. Sneha, we have been saying this from the very start, that the constitutional provisions and the DMC Act were crystal clear about the fact that the aldermen cannot vote. It was crystal clear about the fact that the mayor shall preside over the deputy mayor's election and the subsequent elections. It is very clear now that BJP, in fact, the LG acts as the stooge of the BJP and plays this obstructionist politics, and it has resulted in a loss of time for the court and the citizens of Delhi. So this is a lesson that BJP should perhaps now know, that we are not Congress, that we will let something like what they did in Karnataka happen in Delhi. There is the rule of law that needs to be followed. This is a tight slap on the face of the BJP today by the Supreme Court of India. And we are very grateful to the Supreme Court of India to uphold the law and the practice of law. Mahesh Verma, good evening. Welcome to this discussion. Mahesh Verma is the spokesperson for BJP. Your response to very strong statements by Ms. Priyanka. तिल को ताड़ बनाना, दिल्ली को पूरी तरह से अराजक स्थिति में लाना, फिर आपको ये कहते हुए और ये बताते हुए कि आखिर में 2 महीने या 2.5 महीने का जो ये डिले हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आपको ये बताते हुए शर्म आती है कि भाई आप जो है ये नहीं बता पा रहे हो कि एल्डरमैन का ओथ अगर पहले हो जाता है तो उसको लेकर आप हंगामा काटते हो। आप टीवी पे उसके बाद जब एल्डरमैन के राइट मांग रहे थे वोटिंग के सुप्रीम कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी थप्पड़ मारा है आपको टीवी पे झूठ। मैं कह रहा हूँ कि सुनिए, पहली बात तो ये कि इस तरह के गाली गलौज, इस तरह के अपशब्द और इस तरह के अभद्र तरीके से मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आप लोग की तो ये आप लोगों ने चलन बना लिया अपना कि इसी तरह की बात करके आप quickly revisit. I know Ms. Priyanka and Mr. Mahesh are going to go very strongly at each other, but let's quickly revisit on what really the Supreme Court has said. Some very important statements made by the Supreme Court, Mr. Mahesh. Let me just tell what the Supreme Court has said. One, the aldermen or the LG nominated members will not have a right to vote. That's the first thing that the Supreme Court has said. Supreme Court also said that they will, it's not going to accept the MCD or the Lieutenant Governor's statement or the arguments made by them, and has given an ultimatum of 24 hours. Aam Aadmi Party is saying this is their victory. मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आप गए, आप इसलिए गए कि आपको कहीं प्रिजाइडिंग अफसर जो सत्या शर्मा थी, उनका उन्होंने एक
एक उन्होंने उस समय बात कही हाउस में कि जो एल्डरमैन है, नॉमिनेटेड मेंबर हैं, उनको भी वोट के अधिकार मिलने चाहिए। आप मात्र इस बात को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जबकि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन, इस तरह का कोई गजट नोटिफिकेशन, इस तरह का कोई ऐसी चीज, कोई ऑर्डर कहीं सामने था नहीं, जिसको लेकर इतना हो हल्ला हंगामा आपने काट दिया। आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कानून में था, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह से तिल को ताल बढ़ाना, सच बोलिए सर, सच बोलने में कुछ नुकसान नहीं होगा। आपके वकील ने कोर्ट में कहा कि ऑल्डरमैन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए। आप अभी भी कहा, हम कब कह रहे हैं, हमारे सोलिसिटर जनरल ने एमसीडी के अदानी के मसले पे जेपीसी नहीं उठाते। मिस्टर महेश, let me ask you at this point, if you are saying that the BJP or the LG did not make any such statements or claims that the Aam Aadmi Party is making, then what did the Supreme Court mean when the Supreme Court says, and this is the Chief Justice of India who says, we don't accept the MCD and the Lieutenant Governor's submissions? Then what is the CGI indicating at? क्या सबमिशन? लेफ्टिनेंट गवर्नर का तो कोई सबमिशन ऐसा है ही नहीं। But this is what the Supreme Court is तरफ से saying. तुषार मेहता ने नहीं, जो सोलिसिटर जनरल ने जो सबमिशन रखा, वो ये रखा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको भी ये इस तरह से हाउस अगर चाहे तो उनको भी ये वोट का अधिकार मिल सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुषार मेहता जी ने आर्ग्यू नहीं किया, आपके एआरजी जैन साहब थे। आप थोड़ा सा अगर 243R पहले ही पढ़ लेते तो कोर्ट का टाइम जाया नहीं होता, दिल्ली की जनता का टाइम जाया नहीं होता। आपको ये तो अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के नहीं, अगर आप यही पता वकील नहीं जाते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी जाते यही कहते हुए कि ये एक्ट है, ये कानून है, ये चीज है, इसको आप कंसीडर कर लीजिए। आपने आप सीधा सुप्रीम, आपका हंगामा नहीं, आपका हंगामा खड़ा करने का मकसद था, आपने नहीं, आपका हंगामा खड़ा करने का मकसद है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? आप लगातार उसी दिन से इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं कि वो दबी हुई है ना, वो इसीलिए है क्योंकि Mr. Mahesh and Ms. Priyanka, let me ask you at this point, while the Supreme Court has now said that within 24 hours the MCD does need to have its first meeting. We must remember the elections for the MCD was held way back in December 2022, if I may say, just the last year itself. It's a new year altogether now. 2 months on, the meeting hasn't happened yet, no elections for the mayor yet. But that being one side, is the Supreme Court's order now a new chapter in a tussle between the Lieutenant Governor and the Chief Minister of Delhi? First to you, Ms. Priyanka. Look at the tweets, whether it be by Saurabh Bhardwaj or Chief Minister Kejriwal. While they've thanked the Supreme Court, they both have hit out at the BJP and the Lieutenant Governor. So is this a new chapter in the tussle between the LG and the Chief Minister of Delhi? I sincerely believe that the BJP does not believe in reading and has a lot of fake degrees, and so they perhaps cannot read. There is the demarcation of the areas in which the LG must operate and which the elected government of Delhi must operate is very clear, has been defined by the Supreme Court in 2018. The only thing that the LG should and must look at is the public order, is the police, and is the land of Delhi. So it is high time that Sir sitting here must convey to his stooge that he must start looking at the law and order and leave the rest for the elected government of Delhi. The unelected has only so much power. In fact, he has no authority to take any decision on his own except in consultation with the Council of Ministers. The Supreme Court has very clearly said that in 2018. Mr. Mahesh Verma, do you want to come in at this time? Not new allegations being raised by Ms. Priyanka. In fact, these are the allegations that are being raised by Aam Aadmi Party time and again, saying there are efforts by the BJP, by the centre and the Lieutenant Governor to scuttle the moves of the government or the functioning of the government. After the Supreme Court's verdict, those allegations coming again to the fore. What do you have to say? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं जो ऑलरेडी मेंशन हैं उसी के एम्बिट में है। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ एम्बिट जाके सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, ये सबको मालूम है। इन लोगों ने बात को बताया, बात को पूरी ये बोल रहे हैं या मुझे बोल रहे हैं, यार ये क्या तरीका है, ये क्या, ये सब ये पढ़ी लिखी हैं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, ये डिबेट करने। It's okay, Mr. Mahesh. I've told Ms. Priyanka to allow you to speak. Please continue. Please continue, Mr. Mahesh.
एक चीज बता दीजिए कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को लेकर जो है किसी तरह से, और किस चीज पे ऑर्डर था कि प्रिजाइडिंग अफसर ने ऐसा कोई बात कही, कोई सदन ओपन हाउस में जो है ये बात कही गई प्रिजाइडिंग अफसर सत्या शर्मा जी द्वारा कि भाई जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनको भी पहली बार वोटिंग का राइट्स थे। कोर्ट में भी इसी बात को लेकर है। अच्छा, ये बात कही है, लेकिन इसको लेकर जो है आप इतना व्याकुल आकुल हो गए। इसको लेकर कोई ऑर्डर नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट का, न एलजी ने कोई ऑर्डर ऐसा किया, एडमिनिस्ट्रेटर ने, ना ऐसी कोई बात हुई। आज सिंपल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये लॉ है, इस लॉ के तहत जो है चुनाव होगा। अब सवाल उठता है कि नॉमिनेटेड, let Mr. Mahesh speak. Ms. Priyanka, we'll come back to you. We have a minute left in the debate. Let Mr. Mahesh make his points, Ms. Priyanka. Let Mr. Mahesh make his points. Mr. Mahesh, you are saying that one BJP or the Lieutenant Governor or the MCD never said something like this. I request all of you to please maintain decorum. Mr. Mahesh, please continue. मैं आपसे ये पूछना और समझना चाह रहा हूं, एनडीटीवी के दर्शकों को गुमराह मत करिए। कम से कम ये तो बताइए कि आप मुझे बताइए नॉमिनेटेड मेंबर का मतलब क्या? अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा, जो कि आज जिनको कोर्ट ने सजा सुनाई हुई है, वो लोग भी एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे वोट के लिए? अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है। Miss Priyanka, do you want to respond to that? Let me respond. Let me tell you the submission they made in court today. Mahesh ji is blatantly lying on your television. Mahesh ji, it is good. Please do not lie. I will read आपने कोर्ट में क्या कहा आपके एसजी ने, जिसके लिए कोर्ट ने कहा। अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को लेकर आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप उसके ऊपर जवाब दीजिए। Do you want to respond to what Mr. Mahesh is saying right now, Priyanka? Why should I divert from the topic and not bust his lies on national television? Let me tell you what the submission was made. डाइवर्ट करने की बात नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर के ऊपर अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को लेकर क्या होगा? सर, ये क्लियर होना चाहिए। सर सुनिए, मैं आपको क्लियर बताती हूँ, फिर सुनिए सर, मैं बताती हूँ। पहले तो जब आप वोटिंग करते हैं, आपको पता ही होगा कि उसमें फॉर्म भरा जाता है, सारे उसमें डिटेल्स दिए जाती हैं अपनी एसेट्स की, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की, उसके बाद सिलेक्शन होता है। और आज 30 seconds each for the final comments from Ms. Priyanka and Mr. Mahesh. I will not be able to give you more time. We are totally out of time. 30 seconds maximum to each of you, please. Mr. Mahesh, first with you. देखिए, मेरा ये कहना है कि संजीव झा, अखिलेश पति त्रिपाठी, जिनको न्यायालय ने जो है अपराधी मान लिया है, उनको सजा सुनाई है, उसके ऊपर जो है अस्पष्टता के साथ जो है ये कोर्ट का भी आदेश आना चाहिए था, और अगर नहीं आया है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर आना चाहिए। उसके लिए भी आम आदमी पार्टी को जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि उनका क्या होगा। अगर जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक उनको वोटिंग राइट्स है या नहीं, ये स्पष्ट होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि जिस तरह की बातें जो है आप लोग मनगढ़ंत बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट से हम जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से हमें ये मिला, हमें चाटा पड़ा। We're totally out of time. 30 seconds to Ms. Priyanka, please. ये कोई तरीका नहीं है। I must tell you that he is sitting here and making up newer allegations. None of this was raised in the Supreme Court. The Supreme Court, they begged that the aldermen be given right to vote, and the Supreme Court said we are unable to accept the submission by MCD and Lieutenant Governor as the source of statutory provision is contained in 243 RN Constitution itself. So, thank you, Mr. Mahesh, and thank you, Ms. Priyanka, for joining us on this discussion. A very important verdict from the Supreme Court. But one thing for sure, at least now, the MCD will start functioning in 24 hours. They have to have their first meeting.